cater the need of higher education in Western UP, and probably it is the first university to have started MPhil degree program at that time in the country. The university has a vast and beautiful campus which is spread over more than 220 acres of land. The campus of this university comprises 20 regular and 22 self-finance departments, and more than 900 colleges and institutes are affiliated to this university in the catchment area of 9 districts of Western Uttar Pradesh. University provides high standard and quality education in all discipline of knowledge. Under the visionary leadership of our respected Vice Chancellor, Professor N.K. Taneja, the university has set up new heights in all dimensions of academics, in teaching, learning, research, and in administration also. This particular webinar is aimed to create awareness, clarity, and vision as envisaged in the National Education Policy 2020, in particular with reference to its implementation in higher education. We hope that you all will find this webinar highly motivating, informative, and beneficial for understanding the implementation of National Education Policy 2020 in higher education in the near future. That was all about the welcome of guests. Our chief guest of this webinar is Monica S. Garg. We are happy to have Mrs. Monica S. Garg with us. Now, before that, I invite our Pro Vice Chancellor, Madam Y. Vimila, to welcome the guests and say something about this important webinar. Professor Y. Vimila. Madam Professor Y. Vimila, you please welcome the guests and participants. I did not unmute myself. I'm sorry. So again, a very good afternoon to all of you. Today on this auspicious Bhadrapad Shukla Ekadashi, I welcome you all on behalf of Chaudhry Charan Singh University Fraternity to the national webinar on New National Education Policy 2020, Implementation in Higher Education. We have joined together to brainstorm over the diversity of existing institutions and challenges in implementing the policy in uniformly. First of all, I welcome the dignitaries on the dais, our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Taneja, who is always acting as a lighthouse, guiding with his charismatic ideas and vision. I heartily welcome our eminent guest speakers, two of whom are ladies with the powers of words and deeds, who have made their presence felt strongly in the academic arena of higher education. Dr. Pankaj Mittal, Secretary General of Higher Education, and Mrs. Monica Garg, Additional Chief Secretary of Higher Education, UP. And the third eminent speaker is our own younger brother, Dr. V.K. Malhotra, who is holding a high position, Member Secretary of ICSSR. And as I just mentioned, that new education policy implementation under the diversity which all the universities of UP hold, and the whole country also they hold, it is not a simple task, and therefore in all the states there are already brainstorming sessions going on for the implementation. The policy, which is a holistic one,
which carries everyone together and gives opportunity and chance to every citizen of India, every student, every youngster, a chance to come up with his own ideas, with vision, with innovation, to show his best, his or her best in every sphere of life, so that the nation, which used to have a very high prestigious education system in the ancient times, is once again regained with a new look. After all, every time there is a change, and that change has to be accepted. And this change should be remembering the Indian culture, the heritage, the civilizations that have been here, and the religions, the nature, the diversity, everything, the caste, color, creed, everything will be inclusive in it. And I am very sure that in the coming years, we are going to see with the phasing out of the old system and coming up of the new system, there will be changes again coming up. And we will be heading towards an India which respects the heritage, which follows the path of the ancestors in a way that the new world sees the light of Indian wisdom. I don't have to say much, but as I'm supposed to welcome with just a few words, so I would like to welcome the deans, the directors, the teachers, the faculty of university who have all joined this webinar. A hearty welcome I extend to them, and I wish that after listening to our dignitaries, we all will be enlightened to the extent that we wished to. So again, welcome you all, and I hand over the microphone to Professor Birpal Singh. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you very much for being us and take care all the things about this webinar. Now, we are proceed further. We are happy to have Mrs. Monica S. Garg, IAS, as the chief guest of today's webinar. She presently is at the helm of higher education in the Government of State of Uttar Pradesh, being the Additional Chief Secretary, Department of Higher Education, UP Government. During our meeting of the Committee on the Implementation of this National Education Policy 2020 in context to higher education in UP State, we have found her to be very enthusiastic about overhauling the higher education system in the state. She is also the chairperson of this committee. I welcome you, madam, to this webinar of our university. Mrs. Monica S. Garg did his MSc Honours and MPhil in Physics from Punjab University, Chandigarh. She also obtained a PG Diploma and MBA during her services. She joined the coveted Indian Administrative Services in the year 1989 and has served in various positions in the state of Uttar Pradesh as well as in central government of India. During her career, she has served as magistrate and collector, COE of development authorities, additional commissioner, and special secretary in various departments of Uttar Pradesh government, such as trade tax, finance, textile, khadi and gramodyog, etc. The field of education has always been her liking and close to her heart. Therefore, she served as the principal secretary in the Department of Technical Education and the director of National Institute of Fashion Technology. We feel proud of you, madam, that you joined the Department of Higher Education of our state, Uttar Pradesh government, as principal secretary in February this year. She is a dynamic administrator, a profound thinker, and an avid writer. Her articles are published in national journals of repute from time to time. By seeing the participant list, unfortunately, I'm not finding her
connected right now, maybe due to network problem, as she informed us that she will be in travel at that time, and she will try to join us soon. Hopefully, she will join us very soon. Till that, we should proceed further. And in that context, now I again welcome our keynote speakers, Dr. Mrs. Pankaj Mittal. And before inviting her, let me say few words about Dr. Mrs. Pankaj Mittal. It is a matter of great pleasure for all of us that Dr. Mrs. Pankaj Mittal is with us as a keynote speaker in this webinar. Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General of the Association of Indian Universities, AIU, is the second woman Secretary General of the association in its 95 years of existence. Prior to joining AIU, she has been serving the higher education sector, especially university education, for over 3 decades at the apex regulator of higher education, that is University Grant Commission of this country. Dr. Mrs. Pankaj Mittal is a Fulbright scholar and has been a topper in MSc and PhD in agriculture statistics from IARI, New Delhi. She has a wide-ranging experience of over 3 decades in higher education, in policy planning and management of higher education. Dr. Mittal earlier served as the first regular Vice Chancellor of Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur, Haryana, and the first rural women university of the North India in 2008, at very young age of 44 years, to undertake an wondrous task of developing a small, very small Gurukul into an institution of repute. Dr. Mittal introduced a series of innovative practices and reforms as the Vice Chancellor of the only rural and residential and multi-faculty and women state university of the country that imparting education to more than 7,000 girls starting from KG level till PhD level in a holistic manner. During her tenure as Vice Chancellor in this particular university, Dr. Mittal transformed this small Gurukul into a university with its now on an international map and having collaboration and MOU with different foreign university across the globe. Dr. Mittal has visited number of countries like USA, Canada, United Kingdom, Australia, Mexico, China, South Korea, Spain, Germany, South Africa, Hong Kong, Malaysia, and many more, for academic purposes, for presenting research papers in international conferences, and for academic excellence on behalf of UGC and the university. Dr. Mittal has also lead a delegation of 15 Vice Chancellor to UK for academic collaborations. Dr. Mittal is also the recipient of many awards and honors, as few are, I am telling few awards. Fulbright Nehru Scholarship Grant for Educational Administrators, President of India Award in 2017 for Digital Initiative in Higher Education, Honorary Doctorate, DLIT from Karnataka State Women University, Vijayapur, Karnataka. First Padam Shri Subhasini Devi Award 2018 for contribution in societal development and community engagement from the Chief Minister of Haryana. Coimbra Gold Standard Award for Leadership in Education for the year 2018, and many more. Dr. Mittal served as a member of various high-powered committee and professional bodies of UGC, MHRD, and many universities. She has published a number of papers, articles, occasional papers, and reports
on issues related to higher education and women empowerment in national and international repute journals. Now, I humbly invite you, madam, to enrich the august audience with your valuable views on the implementation of National Education Policy 2020 in higher education. And I further request to our all participants, please put your questions or queries, if you have any, in our chat box, and we will take these queries after the speech of our keynote speakers, Dr. Pankaj Mittal and Professor V.K. Malhotra. With these words, I over to you, Madam, Dr. Mrs. Pankaj Mittal. Thank you, Veerpal Singh ji. Thanks for a very, very elaborate introduction. It was too generous of you. First of all, I would like to thank Professor N.K. Taneja ji, Vice Chancellor of CCS University, Meerut, for inviting me to this program and giving me an opportunity to share my views with all of you. When we talk of national education policy, we know that, first of all, tell me whether I should speak in English or Hindi. Taneja sir. Madam, you can speak as your wish. माने हिंदी भी बोलेंगे तो ठीक रहेगा, मिक्स बोलेंगे ठीक रहेगा. मतलब depends कि आपके जो viewers हैं, which language they are more comfortable with. They are equally comfortable in both the languages, and it's your choice. Okay, so then I will prefer Hindi. So because मुझे लगता है कि जब हिंदी में बात करते हैं तो दिल से दिल की बात आती है, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है. तो पर क्योंकि इंग्लिश में बोलने की आदत है तो बीच बीच में इंग्लिश के शब्द आएंगे ही आएंगे, तो उसको मैं रोक नहीं पाऊंगी, पर आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी ओनली. ठीक है, ठीक है. सो जब हम नेशनल पॉलिसी की बात करते हैं तो 34 साल के बाद हमें ये पॉलिसी मिली, और सबसे ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग, इनोवेटिव, स्टूडेंट सेंट्रिक एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसी ये है. डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि इसको बनाने के लिए जो विचार विमर्श हुआ, जो डिस्कशंस हुआ करीब 2.5 लाख लोगों से, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं पे भी इस तरह से इतना विचार विमर्श करके कोई पॉलिसी बनती है. और 2.5 लाख लोगों में भी सारे यूनिवर्सिटी सेक्टर के लोग नहीं थे, उसमें पंचायत लेवल तक, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सबसे बात करके, मतलब नीचे से मतलब पंचायत लेवल से लेके एजुकेशन मिनिस्टर्स तक, वाइस चांसलर्स तक, सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स से लेके बात करके फिर इस पॉलिसी को बनाया गया, उनसे बातचीत करके, उनके सुझाव लेके. तो इट इज अ वेरी वेरी डेमोक्रेटिक पॉलिसी. इसीलिए इसको बनाने में इतना समय भी लगा, 3 से 4 साल इसको बनाने में लगे, फिर उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट करने में थोड़ा सा समय लगा. तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, क्योंकि इस पॉलिसी में वो है जो कि अभी तक हमने किसी भी पॉलिसी में नहीं देखा, और इसमें वो है जो कि अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे सालों से कि शायद ऐसा इंडिया में होता तो कैसा होता. तो इस तरह की पॉलिसी है. मैं एक एक करके पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट, सभी तो मैं इतने छोटे समय पे नहीं बोल पाऊंगी, पर जो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनके ऊपर आऊंगी. सबसे पहले जो मैंने बोला कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है, तो स्टूडेंट्स के लिए इस पॉलिसी में क्या है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इस पॉलिसी में स्टूडेंट को एक तरह से किंग की तरह ट्रीट किया गया. स्टूडेंट इज ट्रीटेड लाइक ए किंग. उसको सब तरह की फ्रीडम दी गई है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ choosing a subject, freedom of choosing a discipline, freedom of choosing a university, freedom of speed. ये सारी फ्रीडम्स उनको दी गई हैं. एक एक करके इन सब पे आऊंगी, क्योंकि पॉलिसी ये कहती है कि आने वाले समय में all the universities should be multi faculty universities. मतलब सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटीज जो अभी तक चल रही थी, जैसे खाली लॉ यूनिवर्सिटी या खाली मेडिकल या इंजीनियरिंग, इस तरह की अकेली या बीएड कॉलेजेस जो चल रहे थे, सिर्फ बीएड कॉलेजेस, वो आगे से नहीं चलेंगे. एवरी इंस्टीट्यूशन विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी. इसका मतलब ये हो गया कि सब इंस्टीट्यूशंस को अपने स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन के अलावा बाकी प्रोग्राम्स भी चलाने पड़ेंगे, बाकी डिसिप्लिन्स भी चलाने पड़ेंगे. और ये किस लिए किया? इसलिए किया कि कोई भी बच्चा इन आइसोलेशन नहीं सीख सकता. मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग का बच्चा है, उसको अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की जानकारी दी जाए और उनको इसके बारे में कोई जानकारी ना दी जाए कि एनवायरनमेंट के ऐसा इफेक्ट होगा, या सोशियोलॉजी के ऊपर, या डेमोग्राफी के ऊपर, तो इंजीनियर, जैसे मान लो एक इंजीनियर अगर मान लो कोई डैम बनाना है, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी तो चाहिए, और उसके साथ उसको ये भी जानकारी चाहिए
कि अगर मैं डैम बनाऊंगा तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं डैम बनाऊंगा तो उसका जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन होगी, जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऊपर उनका क्या फर्क पड़ेगा, उनको कैसे देखना है। तो इसलिए उन सब की जानकारी भी उसको चाहिए अगर वो एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है तो इसलिए पॉलिसी में ये कहा गया है कि एवरी इंस्टीट्यूशन विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी, और हर बच्चे के पास ये चॉइस होगी कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि आपके पास अभी भी चॉइस है कि आप कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, पर विद इन ए प्रोग्राम क्या पढ़ना चाहते हैं ये चॉइस आपके पास पहली बार आ रही है। जैसे मान लो आपने से बीएससी लिया, आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स लिया, तो बीएससी फिजिक्स के कोर पेपर्स तो करने ही पड़ेंगे, पर जो कोर पेपर्स के अलावा सब्सिडरी पेपर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि रिलेटेड सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में लें। आप म्यूजिक में भी ले सकते हैं, पेंटिंग में भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, मतलब आप मन चाहे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इतनी आजादी, जो मैं फ्रीडम की बात करी तो फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बच्चे को दी है। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया तो आपको उसी प्रोग्राम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपका मन चाहा पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो दिस वाज द फ्रीडम ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। फिर मैं आती हूँ फ्रीडम ऑफ चूजिंग द यूनिवर्सिटी। तो फ्रीडम ऑफ चूजिंग द यूनिवर्सिटी पे जब हम आते हैं तो आज भी आपको लगेगा कि फ्रीडम ऑफ चूजिंग द यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, पर अब थोड़ा सा फर्क हो गया, थोड़ा सा फर्क आया है थ्रू ABC। When I say ABC, ABC is not English alphabet ABC. ABC का मतलब Academic Bank of Credit. तो what is Academic Bank of Credit? Academic Bank of Credit is a बैंक, जैसा आप कमर्शियल बैंक्स होते हैं जहां पैसे जमा कराते हैं, ABC में आप क्रेडिट्स जमा कराएंगे। तो जब आप क्रेडिट्स जमा कराएंगे तो क्रेडिट्स कैसे जमा होंगे पहले तो ये समझना पड़ेगा, और उससे भी पहले ये समझना पड़ेगा कि क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि क्रेडिट क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स भी आगे मुझसे कहते हैं कि हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ क्रेडिट, इसका डेफिनेशन ही नहीं पता। तो क्रेडिट की डेफिनेशन हर देश में अलग अलग होता है। इंडिया में जो क्रेडिट की डेफिनेशन है वो ये है कि अगर किसी कोर्स को एक हफ्ते में 1 घंटे की पढ़ाई करानी है तो वो 1 क्रेडिट का कोर्स है। अगर किसी कोर्स को 2 घंटे की पढ़ाई करानी है तो 2 क्रेडिट का कोर्स है। अब 1 घंटे की पढ़ाई का क्या मतलब हुआ, किसी भी सेमेस्टर में करीब 15 हफ्ते होते हैं, तो 15 हफ्ते मतलब 15 घंटे। तो किसी कोर्स में अगर इतनी पढ़ाई चाहिए कि वो 15 घंटे में पूरी हो जाए तो वो 1 क्रेडिट का कोर्स होगा। अगर वो पढ़ाई 30 घंटे में पूरी होगी तो वो 2 क्रेडिट का कोर्स होगा। अगर वो पढ़ाई 45 घंटे में पूरी होगी तो वो 3 क्रेडिट का कोर्स होगा। तो इस तरह से क्रेडिट डिसाइड किए जाते हैं। तो जो भी कोर्स उसकी कितनी गहनता से, कितनी विस्तार से उसके कोर्स को पढ़ाया जा रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं कि उस कोर्स को कितने क्रेडिट दिए जाएंगे। जो ज्यादा एक्सटेंसिव कोर्स है जिसमें ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिसको समझने में ज्यादा समय लगेगा, तो उसके क्रेडिट्स कम होंगे। जो छोटे छोटे कोर्सेज है उनके क्रेडिट कम होंगे। जिसको विस्तार से करना है उसके ज्यादा होंगे, जो छोटे छोटे कोर्स है उसके क्रेडिट्स कम होंगे। तो अब जब आपको जैसे मान लो आपका बीएससी फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बीएससी फिजिक्स में मान लो 16 पेपर है, तो पेपर को हम बोलते हैं कोर्स। तो आपके पास 16 कोर्स हो गए बीएससी में। तो आज की डेट में क्या होता है कि अगर आपने बीएससी फिजिक्स में मेरठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आपको 16 के 16 पेपर मेरठ यूनिवर्सिटी से करना पड़ेंगे, 16 के 16 कोर्स मेरठ यूनिवर्सिटी से करने पड़ेंगे। आने वाले समय में क्या होगा, अगर ये पॉलिसी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होती है, जब एबीसी बन जाएगा तो आप 16 पेपर में से 4 पेपर हो सकता है मेरठ यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि वहां के आपको टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, वो वाले टीचर्स बेस्ट टीचर्स हैं। हो सकता है 3 कोर्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, 2 कोर्स आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से करें, 2 कोर्स आप जेएनयू से करें। तो आप डिवाइड कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम को कि आप कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब आप ये सोचेंगे कि जेएनयू से 2 कोर्सेज कैसे करेंगे, क्योंकि एडमिशन तो पूरे प्रोग्राम में मिलता है। तो जब ये एबीसी इंप्लीमेंट होगा तो आपको एडमिशन प्रोग्राम के अलावा कोर्सेज में भी एडमिशन मिलेगा, इंडिविजुअल कोर्सेज में। तो हो सकता है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पूरे प्रोग्राम में एडमिशन ना ले, आप सिर्फ इंडिविजुअल कोर्सेज करें अलग अलग यूनिवर्सिटी से। तो हर यूनिवर्सिटी से जब आप एक कोर्स कर लेंगे तो कोर्स करके आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें कोर्स का नाम लिखा रहेगा, कितने क्रेडिट का कोर्स है ये लिखा रहेगा, और क्या आपने ग्रेड पाया वो लिखा रहेगा। तो उस सर्टिफिकेट को लेके जब आप एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे जाएंगे तो वो आपका बैंक में उस कोर्स का नाम, क्रेडिट और ग्रेड जमा कर लेंगे। तो इसी तरह आप अलग अलग जगह से या एक ही जगह से 4-5 कोर्सेज करके आप उस बैंक में सर्टिफिकेट जमा करते चले जाएंगे और आपके क्रेडिट जमा होते चले जाएंगे।
और जब आपके पास इतने क्रेडिट हो जाएंगे जिससे कि आपको एक डिग्री मिल पाए, मतलब जैसे बीएससी में आज की डेट पे करीब करीब 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं, और आपने क्रेडिट जमा कर करके मान लो 150 क्रेडिट जमा कर लिए, तो फिर आप जब ये 150 क्रेडिट हो गए और उसमें से कुछ मिनिमम नंबर उस कोर बीएससी फिजिक्स से कोर क्रेडिट्स जरूर चाहिए होंगे, तो आप कहेंगे कि देखिए ये सपोज आप मेरठ यूनिवर्सिटी भी आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जाते हैं कि हमने आपकी यूनिवर्सिटी से 30% कोर्सेज किए हैं या 40% कोर्सेज किए हैं, और इन कोर्सेज में से इतने कोर कोर्सेज हैं जितने आपकी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी हैं, पर मैंने टोटल 120 क्रेडिट कर लिया, तो अब आप मेरे को एक डिग्री दे सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी और उतने क्रेडिट आपके बैंक में से माइनस हो जाएंगे। जैसे मतलब आपने उसको रिडीम कर लिया उन क्रेडिट्स को फॉर गेटिंग दी डिग्री। तो जब आप रिडीम कर लेंगे तो आपको एक डिग्री मिलेगी और बाकी 150 में से 120 कट के 30 क्रेडिट आपके पास बैंक में रह जाएंगे, जिसको आप आगे से फिर से जमा कर सकते हैं बाकी डिग्री पाने के लिए, या सिर्फ खाली कोर्सेज के बेसिस पे भी आगे नौकरियां मिलेगी, क्योंकि नौकरियां आने वाले समय में डिग्रीज पे नहीं मिलेंगी, आपके नॉलेज बेस पे मिलेंगी कि आपको नॉलेज कितनी है, सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। तो इस तरह से एबीसी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या हुआ, आपके पास फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी आ गई, कि फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी विद इन द प्रोग्राम ऑल्सो, विद इन ए प्रोग्राम आप 6 यूनिवर्सिटी से 5 यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हैं और आपको डिग्री मिल जाएगी। और इसी के साथ एसोसिएटेड है फ्रीडम ऑफ स्पीड। तो फ्रीडम ऑफ स्पीड कैसे मिलेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीड इस तरीके से मिलेगा कि एक तो आपने ये जो कोर्सेज किए, आपके पास फ्रीडम है कि आप 1 साल में करें, 2 साल में करें, 3 साल में करें। इसके साथ साथ ही आपके पास जो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सुविधा है, उसमें ये हो रहा है कि आपको, जैसे आपने अगर आज बीएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया मेरठ यूनिवर्सिटी में, और अगर आपको से फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। और अगर आपको 4 साल बाद फिर से बीएससी करने को मन करेगा, तो आपको फिर से क्लास 1 में एडमिशन लेना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, आपको फर्स्ट ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी, या 4 साल वाली लिबरल एजुकेशन की डिग्री भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपने अगर पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी किसी वजह से, आपको वो डिप्लोमा मिल गया और आपको 4 साल बाद फिर से पढ़ाई करनी है, तो आप उस डिप्लोमा के पास सेम यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा लेके जाएंगे तो थर्ड ईयर में, इस तरह से मतलब आपने जितनी पढ़ाई पहले कर ली है वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो काउंट होगी और आपको सीधा लेटरल एंट्री मिलेगी नेक्स्ट सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में। तो इस तरह की जो फ्रीडम ऑफ स्पीड है, आपको कभी नहीं मिली। फ्रीडम ऑफ स्पीड इस तरीके से भी आएगी कि अगर आपने क्रेडिट्स जल्दी जमा कर लिए हैं तो आपको जल्दी भी डिग्री मिल सकती है। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ डिसिप्लिन हो गया, फ्रीडम ऑफ चूजिंग द यूनिवर्सिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीड हो गया। और एक और फ्रीडम जो आपके पास है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्रेडिट्स फेस टू फेस किए जाए, आप इनमें से बहुत सारे क्रेडिट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन में फॉरेन से भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं, इवन फेस टू फेस में फॉरेन से भी कर सकते हैं। पहली बार ये हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई क्रेडिट अर्न किए हैं तो वो भी आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन, जैसे स्वयं एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहाँ पे मुक्स कोर्सेज होते हैं, अगर आपने वहां से अगर आपने क्रेडिट्स किए हैं तो वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं। रादर अभी भी जो रेगुलर प्रोग्राम्स में 40% तक क्रेडिट्स आप स्वयं कोर्स से कर, स्वयं प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी। और दूसरी बात, स्पेशली अगर बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि ये ऐसा समय है, और स्पेशली कोविड के बाद तो ऑनलाइन एजुकेशन में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला ऑनलाइन एजुकेशन को, और सब यूनिवर्सिटीज प्रिपेयर कर रही है अपने आप को कि किस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से सब बच्चों को पढ़ाया जा सके। और इतने रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हमारे देश में और फॉरेन कंट्रीज में हैं कि अब बच्चों को अगर कुछ सीखना है तो उनको क्या चाहिए, सिर्फ लगन चाहिए पढ़ने के लिए, पैशन चाहिए, और डिवाइस के नाम पे सिर्फ एक लैपटॉप और एक नेटवर्क। सारे कोर्सेज फ्री हैं, सारी एजुकेशन फ्री है। अगर अब आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, आईआईटी के प्रोफेसर आपके घर पे आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, आपके कन्वीनियंट टाइम पे ऑनलाइन के माध्यम से। फॉरेन के प्रोफेसर आपके घर पे आएंगे आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से। तो अब स्काई इज द लिमिट फॉर लर्निंग। तो इतना लर्निंग की फैसिलिटीज बच्चों के पास आज तक नहीं मिली। तो इस तरह से, इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है। और इस स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको सबसे ज्यादा काम करना है? वो है यूनिवर्सिटीज को, हमारे टीचर्स को।
हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स इस पे अगर ज्यादा काम नहीं करेंगे तो ये पॉलिसी खाली पॉलिसी रहेगी और वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो जो हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं, जो हम फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हमको मतलब हमें एक तरह से यूनिवर्सिटीज को री इमेजिन करना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले हमने कॉन्फ्रेंस भी की थी एआईयू में, री इमेजिनिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज। उस समय हमें ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटीज को इतनी जल्दी री इमेजिन करना पड़ जाएगा कि एकदम से सिचुएशन बदल जाएगी कोविड की वजह से और इवन एनईपी की वजह से। तो यूनिवर्सिटीज को री इमेजिन करना पड़ेगा। और जब हम यूनिवर्सिटीज को री इमेजिन करते हैं तो हम पूरे नेशन के बच्चों का फ्यूचर री इमेजिन करते हैं, पूरे नेशन का फ्यूचर री इमेजिन करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को री इमेजिन करना है इन अकॉर्डेंस विद दी एनईपी। तो यूनिवर्सिटीज को क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि सरकार की वेट किए बिना कि सरकार क्या क्या करेगी, हमें ये करना है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में ये सारे सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट या 4 इयर्स प्रोग्राम या मल्टी डिसिप्लिनरी या क्रेडिट ट्रांसफर, ये कैसे करें। तो आज से शुरू करना पड़ेगा। हमें अपना इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान में पूरा का पूरा आए कि हम इस सबको कैसे मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो टीचर्स का जैसे स्पेशली टीचर्स के लिए भी इस पॉलिसी में बहुत कुछ है। टीचर्स को सबसे पहले तो ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे बच्चे का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करना है। पूरी की पूरी ऑटोनॉमी टीचर्स के पास है। अपना कंटेंट खुद डिवाइस करेंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी टीचर्स नहीं, कॉलेज टीचर्स भी, क्योंकि कॉलेजेस को धीरे धीरे एफिलिएशन खत्म करके उन सबको ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस बनाया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज उनकी एफिलिएशन खत्म हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटीज को ये भी करना है कि अपने जो कॉलेजेस हैं उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी देनी है और उनको इस लायक बनाना है कि वो उस ऑटोनॉमी को हैंडल कर पाए। इस लायक बनाना है कि वो अपने कोर्सेज का करिकुलम खुद बना पाए, पढ़ाने की पेडागोजी खुद डिसाइड कर पाए, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन खुद कर पाए। तो ये यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी उनके कॉलेजेस की तरफ भी है कि उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो सब कुछ अपने लेवल पे कर पाए। तो टीचर्स को जब ये सारी आजादी होगी कि वो अपने आप डिसाइड करेंगे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जब हम कैसे पढ़ाने की बात करते हैं तो मोस्टली इंडियन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर मेथड यूज किया जाता है, जिसमें टीचर क्लास में जाके पढ़ाते हैं, बच्चे घर पे जाके मनन करते हैं, समझते हैं और फिर एग्जाम में आके उसका आंसर्स लिखते हैं, जो मोस्टली रोट लर्निंग पे बेस्ड होता है कि कैसे उसकी मेमोरी चेक करते हैं। विदेशों में कैसे पढ़ाते हैं, इसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल टोटली उल्टा हो गया। जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चे घर पे जाके मनन करते हैं, विदेशों में बच्चों को रीडिंग मटेरियल, वीडियोस, ऑडियोस इन एडवांस दिए जाते हैं और बच्चे घर से पढ़ के आते हैं और क्लास में जाके खाली क्या होता है, डिस्कशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, मनन होता है। तो हमारे लिए ये जरूरी है, हमारे टीचर्स के लिए, कि अगर हम जो कि नेशनल पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो लर्निंग का मेथड है वो इस तरीके का नहीं होगा कि रोड लर्निंग को प्रमोट करे, तो पढ़ाने का तरीका इस तरीके का होगा कि वो प्रमोट करे क्रिएटिव थिंकिंग को, क्रिटिकल एनालिसिस को, लॉजिकल रीजनिंग को, एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडीज को। तो अगर इस तरह का पढ़ाने का तरीका करना है तो हमें फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल अपनाना पड़ेगा। हमें बच्चों को रीडिंग मटेरियल्स शुरू में देने पड़ेंगे, क्लास में सिर्फ डिस्कशंस करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए इससे बेहतर समय कोई नहीं है, क्योंकि आज की डेट पे जो आपको मटेरियल्स उनको देने हैं वो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल ईपीजी पाठशाला में है, स्वयं में है, फॉरेन साइट्स पे है। तो टीचर्स को सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करके उन OER बोलते हैं हम इसको, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, उन ओपन एजुकेशन रिसोर्स के लिंक्स ढूंढने हैं, बच्चों के साथ एडवांस में वो लिंक्स शेयर करने हैं, बच्चे उसको पढ़ के आएंगे। मतलब दे हैव टू एंश्योर कि बच्चे उसको पढ़ के आए और क्लास में खाली डिस्कशन करना है। तो दिस विल बी ए वेरी वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड, जिसमें कि बच्चों को रोट लर्निंग से हटा के उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाना, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाना, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस बढ़ाना, इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये अगेन, और टीचर्स को एक और 2-3 और भी इसमें बहुत अच्छी बातें जो टीचर्स के लिए दी गई हैं कि अभी ऐसा होता है कि अगर कोई टीचर, अच्छे टीचर्स, कम अच्छे टीचर्स, दोनों तरह के टीचर्स होते हैं, पर सबको सेम टाइम पे प्रमोशन मिलता है, उनका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रमोशन में। पर इस पॉलिसी में कहा गया है कि अगर कोई टीचर ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा अच्छा काम करता है, तो उसको आप फास्ट ट्रैक प्रमोशन दे सकते हैं, उनको आप रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, उनको किसी भी तरह से कुछ भी
ऐसा रिवॉर्ड्स देंगे जिससे कि वो एनकरेज हो और आगे अच्छा पढ़ाने के लिए। तो फास्ट ट्रैक प्रमोशन का प्रावधान है। सिमिलरली ये भी प्रावधान है कि अगर आपको अपने टीचर्स में, लाइक वाइस चांसलर्स को या जो भी मैनेज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, उनको अपने टीचर्स में इस तरह का एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट दिखाई देता है कि वो लीडरशिप रोल आने वाले समय में ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी में ये भी प्रोविजन है कि ऐसे टीचर्स को स्पेशल लीडरशिप ट्रेनिंग देके उनको फ्यूचर के वाइस चांसलर्स बनाया जाए। तो फ्यूचर के वाइस चांसलर्स जो बनेंगे, दे विल ऑल बी ट्रेन्ड इन लीडरशिप क्वालिटीज, इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, इन फाइनेंशियल मैटर्स, जिससे कि जब वो वाइस चांसलर बने तो उनको इस तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आए कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखना है या फाइनेंसिस को कैसे देखना है या लीडरशिप रोल कैसे अदा करना है। तो इस तरह की फैसिलिटीज टीचर्स के लिए भी हैं। और इंटरनेशनलाइजेशन के लिए पॉलिसी बहुत अच्छी है। इंटरनेशनलाइजेशन में पहली बार, मतलब कम से कम 20 साल से वो बिल है जो पेंडिंग है कि एंट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इस पॉलिसी में पहली बार ये बोला गया है कि 100 टॉप की यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ सकती हैं, अपने कैंपसेस एस्टैब्लिश कर सकती हैं। अब उससे क्या फायदा होगा? आज की डेट पे इंडिया से करीब 7 से 8 लाख बच्चे बाहर जा रहे हैं विदेशों में, और करीब 46,000 बच्चे सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गैप कितना है। और जो ये बच्चे 7-8 लाख बाहर जा रहे हैं, कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर ले जा रहे हैं? हर साल $2 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टूडेंट्स। तो जब वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आ जाएंगी तो वो फॉरेन एक्सचेंज हमारा घर पे रहेगा। कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, किसी को अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही है तो उसकी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटी कम हो जाएगी। उन बच्चों का जो मतलब जो आसपास के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के बच्चे हैं, वो भी हो सकता है उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। हमारी यूनिवर्सिटी, मान लो मेरठ यूनिवर्सिटी को किसी टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करना है तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने देश में, अपने घर में बैठ के फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनके साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, उनके साथ जॉइंट टीचिंग कर सकते हैं, उनके प्रोफेसर्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, उनके स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं फॉर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। तो इस तरह का काफी सारे कोलैबोरेशंस बिटवीन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो आज की डेट पे कई यूनिवर्सिटीज को मुश्किल लगता है, वो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटीज को भी जो बाहर कैंपसेस एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोविजन है पॉलिसी में। हमारी यूनिवर्सिटीज को अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन का जो रिच हेरिटेज है, इंडिया की इवन जो फैमिली सिस्टम है, इस तरह का, या फिर योगा है, आयुर्वेदा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंडिया इज द पायनियर। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को और ऐसी नॉलेज को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो हमारा जो अच्छी चीजें हमें पूरी दुनिया में फैलानी पड़ेंगी। तो यूनिवर्सिटीज को एक तरह से जिम्मेवारी दी गई है कि आप सारी दुनिया में अपना जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको फैलाइए। कैसे? बाय एस्टैब्लिशिंग कैंपसेस अब्रॉड। तो ये कैंपसेस अब्रॉड जब हमारी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड, दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन यूनिवर्सिटीज। तो और बहुत सारे इश्यूज हैं, मुझे आई एम श्योर कि डॉक्टर मल्होत्रा बहुत सारे इश्यूज को कवर करेंगे, इसलिए मैं और बहुत सारी चीजें नहीं कवर कर रही हूँ। पर मैं ये कहना, सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसका इंटेंट बहुत अच्छा है, पर पॉलिसी जब तक लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी तब तक उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ शेल्फ पे रहेगी एज ए गुड पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर एवर। तो ये हमारी यूनिवर्सिटीज की जिम्मेवारी है कि आज से शुरू करें। सरकार ने तो अपनी मंशा दिखा दी, उन्होंने जब पहला जो पॉलिसी थी एकदम से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका नाम बदल दिया, तो इमीडिएटली इतनी जल्दी बहुत कम डिसीजन होते हैं, पर इतनी जल्दी उन्होंने ये डिसीजन लिया और प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन, प्रेसिडेंट से लेके नोटिफिकेशन जारी किया। तो हमारी यूनिवर्सिटीज की भी ये जिम्मेवारी है, वाइस चांसलर्स की, टीचर्स की, कि हम भी अपना इंटेंट दिखाएं और हम ये इंश्योर करें कि पॉलिसी को हमने लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। बहुत सारी 80% ऑफ द पॉलिसी ऐसी है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे इंप्लीमेंटेशन होना है, उसके लिए सरकार से किसी नोटिफिकेशन की, किसी की जरूरत नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोग तन मन धन पूरे पैशन से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, और अगर हमने इसको इंप्लीमेंट कर लिया तो ये हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक नींव रखने के समान होगा, एक फाउंडेशन ले करने के समान होगा कि हमने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की फाउंडेशन ले कर दी।
तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ. Thank you very much. Thanks for inviting me here once again. Thank you, Taneja sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिसेज पंकज मित्तल जी. आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इस पॉलिसी की महत्ता को हम लोग को समझाया. हमारे साथ बहुत से हमारे जो महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यगण जुड़े हैं, बहुत से हेड्स जुड़े हैं, विभाग के डीन्स जुड़े हैं. संभवतः सभी लोगों ने बहुत सरलता से इसको समझा होगा. आपसे मोटिवेशन भी हम लोगों ने लिया है कि इसको हम लोगों को ही इम्प्लीमेंट करना है. ऐसा भी हम लोग आपके इस स्पीच से लेके जाते हैं. आपने स्टूडेंट सेंट्रिक की बात की. बहुत अच्छी बात आपने बताई हम लोग को कि स्टूडेंट अब किंग है, उसको हमें ध्यान रखना है. फ्रीडम ऑफ कोर्स की बात की, फ्रीडम ऑफ प्लेस की बात की, फ्रीडम ऑफ डिग्री की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीड की बात की, फ्रीडम ऑफ टाइम की बात की. माने सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों ने हमको बताए. साथ साथ ऑटोनॉमी किस तरह मिलेगी इसकी भी आपने चर्चा की. टीचर्स के लिए क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन कैसे हो सकता है, कैसे हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बाहर जाने से रोक सकते हैं, ऐसी सारी चर्चा आपने की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने हमें टाइम दिया. आप हमारे साथ रहेंगे अभी, ऐसा भी मेरा आपसे निवेदन है. आपके बाद मैं प्रोफेसर वीके मल्होत्रा जी के बारे में उनका ब्रीफ सीवी थोड़ा पढ़ूंगा और फिर आपको इनवाइट करूंगा. I can straight away start. No, sir, it's our privilege to have to say something about you. Very. I will read out very brief CV of you, sir. It is a matter of great pleasure for all of us that our very own Professor V.K. Malhotra is with us here today. He is at present serving the member secretary in Indian Council of Social Sciences Research, New Delhi. He is serving for the second term in this position, and we all feel proud on Professor V.K. Malhotra. We are especially proud of him as he belongs to our university, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, as a professor. He also served here as head, Department of Economics, coordinator, admissions, examinations, and evaluation, and worked as assistant DSW in our university. Professor V.K. Malhotra did his schooling as well as higher education from Meerut itself. He has been a bright student with a throughout first-class career. He received a scholarship during his education, including GRF of UGC. And again, it's a matter of proud that Professor V.K. Malhotra is a student of our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Taneja ji. Professor V.K. Malhotra has also carried out a UGC-sponsored major research project in our university. He has, to his credit, a book entitled Economics of Education, a very popular book of economics, which is prescribed by many universities and institutions across the globe. During his tenure as a faculty in the Department of Economics of this university, he supervised 8 PhD theses and more than 40 MPhil dissertations. His research interest includes governance and economic development, corporate governance, and performance of various industries, intellectual property rights, and India's concern, foreign trades and investments, and many more. I am saying name a few. He has published a number of research papers in the national and international journals of repute. He is on the board of Indian Council of World Affairs and a visitor nominee to the court of Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is also a member of the board of many renowned social science research institutes of the country and is also the part of the executive of many international research bodies and associations. As eminent scholar, a vivid thinker, and a popular teacher, and now an able and vibrant administrator, Professor V.K. Malhotra is a precious feather in the cap of our university. I welcome you, sir, once again to express your take on today's topic regarding national education policy in context to higher education implementation, and let the participants be enlightened with your experience and vision. Now, I humbly request you to continue your speech
Professor V.K. Malhotra. Professor Virpal ji, am I audible? जी sir. And how much time do I have? Sir, you can take more than 40 minutes or 30 or 40, minimum 30. Okay, I'll keep like that only. Thank you. And I'll be switching over between English and Hindi. Right. Very, very learned Professor Ankit Taneja ji, and the Vice Chancellor of the university, my own teacher, the chief guest of this event, Ms. Monica S. Garg, Additional Chief Secretary, Higher Education UP, Professor Y. Vimla, the learned Pro Vice Chancellor of the university, and Professor Hare Krishna, who also happens to be the member of the team that has been constituted by the state government, and very dear Professor Birpal ji. I could see in your introduction of mine as well as that of Professor Vimla, both of you use the word our very own. I continue to be that, and I feel that love for me in this university continues till date, and my association with the university would also continue in various ways that could be possible. Dr. Pankaj Mittal ji, the Secretary General, AIU, New Delhi, she was talking about many issues, largely concentrating on the student centricity of the new education policy 2020. Very learned. I could see the list of the participants also. I'm noticing there are almost 450 participants right now. So many of them have been my teachers also, or with them I have interacted as a student, and then as a faculty member also. So renowned academicians of the university, faculty, scholars, principals, and very dear students. As Pankaj ji said, that we have an education policy in the country which has come to us after 34 years. That is, the last policy came in 1986, and then it was slightly modified in 1992. And prior to that, we had three more policy documents on education. One that appeared from University Education Commission in 1948-49. The other one appeared in 1952-53. And the third one, which is popularly known as Kothari Commission Report, appeared in 1964-66. Of course, if we go through all these documents, there'll be many similarities that we might observe in these documents. And we could notice that as far as broad principles of quality education, value-based education, excellence, spread, equity, all these things appear to be largely common among these policy documents. Something that makes this policy document a little distinct has to be seen in few lights, in fact, and then I'll come to the background in which this document has come before us. In fact, as I said, that it has come to us after 34 years. We all know that liberalization was initiated in our country in early 1990s. And thereafter, we all notice that there have been many changes in the technology in the country and the world. The world is extremely dynamic, and the changes in technology have made the world still more dynamic. But changes in education have not kept pace with the dynamism of the world and the dynamism of the technological changes with which these have been happening. Definitely, this kind of a situation, to some extent, was converting our educational system. I would like to largely be concentrating on higher education. It was converting our educational system
towards redundancy. We all understand it pretty well that whenever came a question before us of bringing about changes, whether in curricula or pedagogy or academic quality, how many of us were quite ready to adopt and implement those changes? This is where from this document definitely talks about the expectations, aspirations, and the challenges before us. We all understand there are few dimensions which are quite new and are quite distinct about this new education policy, and they include multilingualism, pace with the word, thinking somewhere or somewhere envisioning to scale up Indian educational system, especially higher educational system, somewhere at the top in the world, if not at the topmost position, at least among the top countries in the world. We have few things to celebrate, but there are few words of caution where we need to be very, very careful and attentive. The word that make us little celebrate is that since I'm to largely concentrate on higher education, and within higher education, I'll be concentrating on the research also. हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि खाली 0.69% अपने जीडीपी का रिसर्च पर खर्च करने के बावजूद ना पूरी दुनिया की स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। यूएस करीब 2.8% खर्च करता है, साउथ कोरिया 4%, जापान 4% के आसपास खर्च करता है अपने, चाइना का भी एक्सपेंडिचर 2.5 to 3% के बीच में वेरी करता है। इंडिया खाली 0.69 या 0.7% अपने रिसर्च पर खर्च करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में in terms of Scopus and Web of Science publications, India stands at number 3. In social science domain and humanities domain, where India spends only 0.025% of the GDP, which is very minuscule proportion of the GDP being spent on social science and humanities researches. Our ranking, as Birpal ji was introducing me, 2016 में हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग 12th थी और आज हमारी रैंकिंग स्कोपस स्टैटिस्टिक्स से 8वीं है पूरी दुनिया में। इस देश से 10,500 एज पर स्कोपस स्टैटिस्टिक्स पब्लिकेशंस आते थे, आज 23,500 पब्लिकेशंस एनुअली इस देश से पब्लिश हो रहे हैं। I said these are the reasons that must be celebrated among the educationists of the country. But there are several things which this policy document reminds us. In the beginning, while introducing the theme, my friend Professor Birpal Singh was talking about that this webinar is all about making people aware about the new education policy. And secondly, in the topic itself, second thing provided is implementing the policy in respect of the higher education institutions. इन दो चीजों के ऊपर ही हम ज्यादा अपनी बातचीत को कंसंट्रेट करेंगे। 2019 में जो डॉक्यूमेंट मई में प्रेजेंट हुआ, उसमें 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस पे बातचीत हुई। रिसर्च इंटेंसिव, रिसर्च टीचिंग एंड रिसर्च इंटेंसिव और ओनली टीचिंग इंटेंसिव इंस्टीट्यूशंस। उसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई। जैसा डॉक्टर पंकज मित्तल ने बताया कि करीब 2 से 2.5 लाख सजेशंस आए, उनको फिर फिल्टर करके फाइनली ये डॉक्यूमेंट बना। करीब 400-450 पेज के डॉक्यूमेंट के बाद, जिसके अंदर 1,500-2 हज़ार पेज के एनेक्चर्स भी थे, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट करीब 50 से 60 पेज के अंदर ट्रांसलेट हुआ पॉलिसी के स्टेटमेंट के फॉर्म में। अभी इस डॉक्यूमेंट में एक फ़र्क जो ड्राफ्ट 19 में प्रेजेंट हुआ उससे ये है
कि अभी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन है उनमें रिसर्च इंटेंसिवनेस और टीचिंग एंड रिसर्च इंटेंसिवनेस दोनों को जगह दी गई है, और ये लिबर्टी इंस्टीट्यूशंस को दी गई है कि वो डिसाइड करें कि वो रिसर्च इंटेंसिव रहना चाहेंगे ज़्यादा या टीचिंग एंड रिसर्च इंटेंसिव रहना चाहेंगे। जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस की बात है, उनको लार्जली टीचिंग इंटेंसिव रखने की सोच है इस पूरे पॉलिसी के अंदर। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव which this policy document talks about is that taking the gross enrollment ratio in the nation from 25% to 50% by 2035। अगले 15 सालों में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में देश का, वो 2020 के मुकाबले 24-25% के आसपास जो है वो 50 तक जाए। पंकज जी बातचीत कर रही थी स्टूडेंट सेंट्रिसिटी की, और उसमें ऑनलाइन क्लासेस, फ्लिप क्लासरूम्स, इनके ऊपर बातचीत हुई। आई विल नॉट लाइक टू रिपीट ऑल दोज एस्पेक्ट्स। डेफिनेटली COVID-19 period ने it has given the entire world an opportunity to rethink about its methodology of teaching also and discussing with the students. Another interesting part that this policy talks about is that, and I think for any university, I'm very happy to notice that a committee has already been constituted in UP state. And I know from my university, there are 3 members, Professor Birpal, Professor Hare Krishna, and Professor Y. Vimla, who are very much part of that committee. And the committee, I'm being told, that committee is being led by Ms. Monica Garg, who happens to be the additional chief secretary. So the next point that I'm going to raise is going to be very, very significant. Most of the universities in UP state or anywhere else in the country, barring few universities which are termed as top 20 or top 30 universities of the country, हम उन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च है दैट कंटिन्यूज टू बी लार्जली डिसिप्लिनरी इन इट्स वेरी नेचर। इट कंसंट्रेट्स ऑन फ्यू डिसिप्लिन्स ओनली, और इट कंसंट्रेट्स ऑन वन डिसिप्लिन at one point of time. There is hardly any scope for interdisciplinarity or multidisciplinarity. ये पूरी पॉलिसी डिसिप्लिनैरिटी को या सिंगल डिसिप्लिनैरिटी को फेज आउट करने की बात करती है 2040 तक, एंड इट पुट्स इट्स फोकस ऑन मल्टीडिसिप्लिनैरिटी एंड इंटरडिसिप्लिनैरिटी। मुझे अच्छी तरह से याद है व्हेन आई वाज पार्ट और व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द फैकल्टी, a strong understanding used to be developed that perhaps people are not making an attempt to come out of their discipline and talk about the problem in a holistic perspective. हम holistic perspective में problems के ऊपर जिस तरह की problem पूरे देश के सामने है उसके solutions पर हम सभी लोग जैसे विचार करते हैं, उसमें हमारा approach multidisciplinary नहीं है। एक डिसिप्लिन के रिसर्चर्स, फैकल्टी अपने रिसर्च से रिलेटेड शायद दूसरे डिसिप्लिन के लोगों से ऑन रेयर ओकेजन्स डू दे टॉक अबाउट ऑल दिस। मुझे कोई ओकेजन याद नहीं कि हमने सोशल साइंटिस्ट और फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के लोगों को एक साथ बैठ करके मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव के साथ रिसर्च प्रॉब्लम्स पे एक आध पेपर मुझे याद है प्रोफेसर डी पांडे का एक इकोनॉमिक्स के जर्नल में आया। 2-3 ओकेजन पर मैंने मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की फैकल्टी से बातचीत की कि कैसे हम मॉडल्स के अंदर अपने रिसर्च को, खासतौर से इकोनॉमिक रिसर्च को फिट इन कर सकते हैं। कुछ हेल्प भी उनसे ऑन ओकेजन्स पर मिला, बट टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग द होल सब्जेक्ट विद अ मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव,
कि उसमें इकोनॉमिक का कंटेंट कितना है, पॉलिटिकल साइंस का कितना हो सकता है, सोशियोलॉजिकल एंगल क्या हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल एंगल क्या हो सकता है, उसका मैथमेटिकल एंगल क्या है, स्टैटिस्टिकल एंगल क्या है, क्या फिजिक्स के लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं या नहीं, ऑल दीस इश्यूज, दिस इज व्हाट इन्वॉल्व्स मल्टीडिसिप्लिनैरिटी। जिन जिन सब्जेक्ट्स पर पूरे देश में आज बातचीत हो रही है, बड़े इश्यूज के ऊपर हम बातचीत करें तो एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज, अर्बन एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, health, infrastructure, and I take next subject to be very, very important, Industry 4.0, agricultural transformation, demography, technology, environment, climate change. All these issues, they cannot be addressed by one discipline alone or researchers in one discipline. So we need to essentially have an interdisciplinary and a multidisciplinary, and if required, a cross-disciplinary perspective also. पूरी दुनिया में जो गेम है, प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मित्तल इंडिकेट कर रही थी, we as a knowledge gainer and we also as a knowledge creator, वो तभी पॉसिबल है जब हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा है। पूरी I mean, as we talk about becoming Vishwa Guru or one among the best performers in education field in the world, of course, this game relates to the developed countries and those countries which definitely scale themselves up as developed, highly skilled, competent, competitive, knowledge creator, performer, and dynamic. Without all this being practiced, I think we are not going to be the part of, let's say, the people or the community that's going to have an international recognition in this perspective. Very importantly, this policy talks about single discipline based colleges, single discipline based universities, and single discipline based researchers even. And this is why it talks about creating clusters of colleges, schools, and where we have single disciplinary universities. It talks about, especially in the area of agriculture, it talks about, or in the area of education, it talks about converting single discipline based universities into multiple discipline based universities. That's another key dimension of it. We have had sufficient discussions at university level, and we have been having sufficient discussion at national and international level also. To be employed at a good place requires you to have all possible kind of understanding of science and art of life also. This policy makes very good use of few words. For example, at one place, it writes about 64 kalas. What it tries to talk about under this 64 kalas is that it tries to say that the personality of an individual is constituted by one's understanding of different types of arts which are important in life. And these kalas or arts are also somewhere related to the value base of a society, of an individual. It also relates to humanistic, ethical, constitutional, and the values based on Satya, Dharma, Shanti, Prem, and Ahimsa. So it talks about all big principles which are coveted for the entire humankind. It talks about another interesting part of this policy is that it talks about
specializing in local issues. This is why Prime Minister under Atmanirbhar Bharat at different platforms has said, and when he discussed at the national level, while giving to the nation the new education policy, he was talking about holistic education. He was talking about making local or scaling up local to the global level. And one thing or one deficiency that we have been suffering from for a very long period of time is that under a typical university system, we have hardly been having participation from local industry, businesses, artists, and even research internship with associated research institutions. We have been missing these points, but this policy talks about it. Since this webinar intends to discuss what is implementable. So under implementable part, I think building strong networks with local area, local specializations, which might include industry, businesses, artists, research institutions, and research internships also. For example, I would like to say ICSSR, at ICSSR, I'm very much your part and I'm extending my services here. A few students from the university come for research internship in ICSSR affiliated institutes or at ICSSR itself, they would definitely develop substantial understanding about the researches in future, and they can definitely contribute much more. The basic idea is not letting anything go waste. Dr. Mittal has dealt with academic bank of credit, so I'll not be repeating that. I'm very happy to see. At one place, this policy talks about internationalization of our degrees also. Wherever an Indian goes, the point that is raised is whether you have done 3 years graduation or 2 years graduation, because in most of the international universities, the graduation is of 4 years. So most of the time when Indians, they go abroad for higher education, they have to do a bridge course also. And this policy talks about it. And good part is that it definitely extends the facility of doing something from 1 year to 4 years time. So degree and the quality of degree is also graded. On completion of 1 year, you can get a certificate. On 2 years completion, you can get a diploma. On completion of 3 years, you can get a degree. And on completion of four years graduation, you can get an advanced degree. And the last year of which can be accounted for towards having gained some experience in research also. We know from our understanding that the best institutions in the world, because there used to be a point of concern for BTech students in particular, or all graduate level students doing their degrees in science and technology related areas. They were talking about doing their master's degree from India or abroad, but most of the institutions abroad, if they go for the master's in India, then it can be done only after graduate degree, but then it normally talks about 2 years of master's degree. But after 4 years of graduation, some autonomy is being extended to the institution that they can go about master degree of 1 year or 2 years. And 1 year or the 4th year of the graduate degree can be considered towards research experience also. And that is how, if one who is intending to take research work after completion of one's master degree can definitely join the research even after completion of 4 years of undergraduate degree or 4 years plus 1 year of master's degree. So it's going to be, I mean, those of us who think that 1 year of most of the student is going to get wasted,
The story is not like that. There is a greater degree of, I said, internationalization in this kind of a model, while keeping in mind, as I said, the basic idea is nothing should go waste. If you have spent 1 year in your undergraduate classes, you should gain from that. If you have spent 2 years, you should gain in equal proportion. If you have spent 3 or 4 years, you must be gaining from that. A new concept. Dr. Birpal ji was talking about Chaudhry Charan Singh University to be a pioneer in initiation of MPhil degree. But in fact, this policy talks about discontinuing the MPhil degree, right? So it directly makes an entry into PhD courses. Another new idea which is being discussed is MERU, that is multidisciplinary education and research universities. And they would be established at par with IITs, IIMs. There is a brilliant idea of National Research Foundation. Here, being part of the research funding agency of the government, I always think it like this. And most of us feel like that when we meet and talk about the whole issue of research in the country. One, most of us have been working in silos only, and we are not interacting with each other so that the broader objectives of our research can somewhere be converged. If somebody asks this pertinent question here, that what is the mission statement of researchers in India, perhaps we, all of us, will find ourselves unable to define that. After National Research Foundation comes into existence, I think that will give us a golden opportunity to allow a convergence among various institutions or institutional agencies funding researchers in the country to have a broad mission and objective behind all researchers in the country. And maybe this can be a good beginning to promote startups, innovations, and incubation centers in the country. Professor Pankaj Mittal was talking about freedom to faculty for development of curriculum, pedagogy, and assessment procedure. So I'll not spend time there also. The choice of subject is also going to be very, very open. You have choice within the university. If university is not having all resources for the kind of courses that its student might get interested in, they can tie up with other universities, they can tie up with international universities, they can tie up with research institutions, and they can also tie up with the online courses also, and can create credits for the students. There is a focus on comprehensive and continuous evaluation under semester system. We have been doing it, but wherever annual system exists, I think the scope is going to be enhanced in those areas. I've already said that number of new initiatives like Swayam, MOOC, such kind of initiatives have been taken with regard to online courses or distance learning. I'm told that number of channels have been subscribed. There are dedicated channels which are being used, and in days to come, looking at the current scenario in the country and the world, and maybe thinking in terms of we wish this kind of a scenario not to ever emerge, but we have to take into account all possibilities of life. So considering about that, online courses and an appropriate blending of it with the channels which have the most distant reach in the country, I think we can definitely ensure a better spread, better access, and better equity of higher education. A lot has been discussed
for or in the context of autonomy. And we all know that autonomy without accountability, autonomy without performance, autonomy without established credentials of an organization is not going to be of much value. Hence, this policy talks about granting autonomy to the institutions in a staggered manner so that over next 20 years, finally, even colleges, this policy talks about completely coming out of the concept of affiliated colleges and reducing the total number of colleges in the country from around 45, 46,000 to 15,000 over next 15 to 20 years. I think this point can be very pertinent in respect of all affiliating universities, including ours, that how the number of affiliated colleges can be reduced while ensuring good quality of education in every part of the area that falls under the jurisdiction of a university. So high performing universities will be given more autonomy, or high performing institutions will be given greater autonomy first. That is the idea. And Professor Mittal was talking about setting up campuses of foreign universities. I think their campuses will be an easy choice for us. Of course, we have to see the universities which are going to establish their campuses or which show their interest in setting up their campuses in India have to be one of the best in the world. Otherwise, as Dr. Mittal was talking about, that nearly 7 to 8 lakh students go every year abroad for foreign education, whereas 40 to 50,000 students come to India for higher education. The Indians spending while going abroad for higher education, Indian spending amounts to somewhere around 35 to 40,000 crore rupees per annum. The total budget on education is in the range of 95,000 to 1 lakh crore per annum. Right. I see a very good point in the policy that National Research Foundation will attract an annual budget of rupees 20,000 crore, which is 20% of the total allocation at present. Of the total public expenditure on education hat, right? And nearly 35 to 40,000 rupees are spent. And another interesting part for analysis could be, see which are the countries where Indian students are going to get higher education from, and which are the countries where from the students are coming to India to seek higher education here in this country, and which are those institutions also. So I think an analysis of all these facts will be very, very relevant. Government of India in the recent past has taken a marvelous initiative. This COVID-19 crisis definitely forced some of the parents to convince their children to come back to India, at least during the crisis time. And there was a very difficult option before them because they had spent and deposited the admission fee and had deposited even their accommodation fee for 6 years or one year. So the choice was that if they come back, they'll be losing their money. So there was a very good initiative at the end of the government that when they come to India and join some Indian university, all credit that they have earned abroad, they can definitely be made use of here in our case also. Besides it, this policy also talks about removing the words extracurricular or co-curricular. Sports, culture, personality related developments, they all become part of the curricular activities. In India, I have a strong realization, if we talk of the elite in the country, we suffer from two extremes.
That is, either we fall flat or we rise and go above the sky. Right? I'm talking about the choice between one extreme of falling flat and the other extreme of being so egocentric. And I said that in all elite circles, whether academic or bureaucratic, we find traces of that making their presence felt to enormous extent. So personality is definitely an important ingredient of employability in a country like ours or anywhere in the world. So I think addition of sports, culture, and a holistic personality with good linguistic skills. I know that people in Europe normally know not less than 3 languages. Only Britishers know on an average 2 languages, but rest of the Europe, I mean, if we talk about their undergraduates or so, they know more than 3 or more languages. So that's going to be the pattern in our country, and it would start from our own languages first. As I said, expression, whether in writing or oral, is going to be value-based, is going to be very strong component of one's personality. And I would be a little candid while saying that we may think that our personality cannot be judged by outsiders. But the fact of the matter is that when we go for interviews or interaction, our personalities are seen by others more than we could see ourselves. So this dimension, if is added, then definitely the employability of the Indian youth will be increasing. And with a strong skill base and with a strong personality base, they will definitely be becoming much more employable than they have been in the past. Of course, fast track promotions, autonomy to the faculty, a system of incentivization through rewards and promotions and recognitions is going to definitely help us in several ways. I've spent a lot of time, and I think I'll have to miss few points. I'll straight away come to some of the important things which I think would be very, very important for any university to start with. As I said, in respect of colleges, we have to see that how we are going to reduce the number of affiliated colleges in the university system, and we have to plan for that. Secondly, since it has to be done in a phased manner, there is a freedom. I said that cluster of colleges can be created. So we can exercise this freedom also while planning for that. Secondly, we can prioritize some areas of our research. It can happen at the college level, and it can also, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir, you are audible. Okay, because there was Yes, a sir, flicker in light, in fact, so I thought that it went off. No, sir, please, So please. we can prioritize the areas of research. At university level, it would be appropriate that if a lot of interdisciplinarity and multidisciplinarity and collaborations are encouraged. So departments of the university and the departments related to art, humanities, social science, and even science and technology can sit together, and they must talk to each other and see how they can help in each other's researches. And I'm sure if you look at the Web of Science or Scopus statistics, you'll find the kind of publications which are appearing are largely of the nature which are interdisciplinary or multidisciplinary. And such papers or such publications have or attract maximum citations also. We must make all possible efforts to see that how we can implement this policy more comprehensively and holistically. Before
the state government starts issuing its direction and time plan and schedule for the thing. It is better that at university level itself, we start scheduling the thing and tell the state government that this is how we can move forward. I think that would definitely establish the leadership of the university at the state level also. As I said, the collaborations at local level, at state level, at national level, and at international level are going to be of immense value in days to come. I remember when the Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Taneja, and myself visited ICRISAT for an MOU with ICRISAT. Their Director General, who hailed from Canada, in very frank conversation with us, said that if you can create more people like the one that they had as his deputy right then, I'm referring to Professor Rajiv Vashne, right? So they want a good talent from us to be supplied to the topmost international organizations, and they would definitely be looking forward to that. There are many departments in this university which have worked wonders, in fact, at national and international level. They need to be further scaled up, and their expertise in their domain needs to give its benefit in the related areas with other domains also. So because I said that agricultural transformation or rural transformation is being talked about. And I think there, the disciplines like agriculture, botany, they can be of immense help. So I'll just say that these kind of linkages have to be developed. We have to conduct an analysis of our resources also. Our resources that exist as on date and our resources that would exist after 3 to 5 years from now, because the number of affiliated colleges will be coming down. So what would be happening as its impact on our resource position? So how we can take the things forward in that scenario, I think that is very, very relevant. A careful analysis of such kind of linkages has to be done. Right now, we have a policy before us. As I said in the beginning, it has come to us after 34 years in a totally changed scenario. The world is talking about all new issues, whether artificial intelligence, big data analysis, robotics, and all these things have to be finally converted into the very process of production, be that industry, be that agriculture, or the tertiary sector in the economy. So it is in this respect, I think, combining all these resources, initially in terms of research and later in terms of production, has to become a priority for the whole nation. The Prime Minister, in his first speech, while handing over the document to the nation, did say that we have a policy. We need to further detail it for implementation. We also need to strategize and prepare a roadmap, keeping in view the resources available, resources needed, and the resources to be mobilized. I think this is the agenda before us right now. And I think that this is in very brief that I have tried to share some of my concerns. Maybe when we get still a greater opportunity to talk to all of you at length, we can do that. Just one suggestion that I would like to make is that that committee which has been constituted at the state level, it would be appropriate if they take the expertise from other state or national or international level also. I think that would be serving still more purpose of the things that we are talking about. With these words, a lot of thanks to the organizer, of whom I'm very much a part. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर वीके मल्होत्रा जी। आपने बहुत ही थॉटफुल तरीके से और बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव वे में हम सभी पूरी टीचिंग कम्युनिटी को ये बताया कि कैसे एनईपी को इम्प्लीमेंट होना है। और मुझे नहीं लगता
जो मैंने भी इस ड्राफ्ट को पढ़ा है कि कोई पार्ट आपने यहाँ पे छोड़ा है, आपने रिसर्च की जीडीपी से लेके किस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे, कहाँ पे रिसर्च इंटेंसिव होगा, कहाँ पे आपका टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होंगी, कहाँ पे ब्लेंडिंग होगी, किस तरह होगा, कैसे जीईआर हम लोग की बढ़ेगी, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैसे हम लोग लोकल इश्यूज को एड्रेस करेंगे, कैसे उनसे ऑर्गेनाइजेशन से लोकल लेवल पे कोलैबोरेट करके एजुकेशन सिस्टम को देख पाएंगे, कैसे सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा की तरफ चलते हुए हम ये सब काम कर पाएंगे। तो बहुत ही थॉटफुल और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम सब लोग को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मैं चैट बॉक्स देख पा रहा था सर, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो अभी आप भी हैं, शायद डॉक्टर पंकज मित्तल जी भी हमारे साथ होंगी। तो सबसे पहले एक सवाल एक हमारे एमएससी के छात्र हैं, एमएससी केमिस्ट्री के, उनका है सर, उसको आप एड्रेस करेंगे तो अच्छा लगेगा। वो ये जानना चाहते हैं कि सर अब पीएचडी एडमिशन किस तरह होंगे, एमफिल को आपने खत्म कर दिया है, क्या एमफिल का कोई बेनिफिट आगे मिलेगा? तो मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है वो ठीक है, बट आज आप एक्सपर्ट हैं, आप अपने शब्दों में बताएंगे तो लोग संतुष्ट होंगे। इसका सब सर आप जवाब देंगे। प्रोफेसर वीके मल्होत्रा जी। देखिए, किसी भी चीज का कोई रिसर्च वर्क अच्छा है तो मुझे लगता है कि उसका वो कभी भी खराब नहीं जाता। किसी ने एमफिल किया, वो डेफिनेटली उसके उस लेवल पर प्री पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस में डेफिनेटली काउंट होगा। ऑफ कोर्स रिसर्च में या पीएचडी के लिए एडमिशंस कैसे होंगे, मैंने पहले ही कहा अपनी बातचीत में कि अभी पॉलिसी के डिटेल्स बनना बाकी है, उसके लिए कमिटीज भी बनेंगी। डेफिनेटली जो भी सिस्टम बनेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के थ्रू, क्योंकि इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जो एग्जामिनेशंस हैं, आप पूरी देख रहे होंगे कि ज़्यादातर एग्जाम को कंबाइन कर रहे हैं। अभी कुछ एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में 2-3 एजेंसी का, रेलवे का, उनका भी जो टेस्टिंग वगैरह है या एग्जामिनेशन है, उसको भी पूरे देश में कंबाइन किया। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पूरे नेशनल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर ऐसी पॉलिसी बन रही होगी कि जो भी एडमिशन का प्रोसेस होगा वो कंबाइंड होगा और वो इतना जो है डिस्कनेक्टेड नहीं होगा एक दूसरे से। तो एक बात तो ये, और दूसरा मुझे लगता है कि जो लोग एमफिल कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपना डिग्री पूरी करेंगे और मुझे लगता है कि उनको अपने रिज्यूमे में उनके रिसर्च एक्सपीरियंस एट पीएचडी लेवल उसको लिखने का एक एडवांटेज रहेगा। सर धन्यवाद। एक दूसरा सवाल एक हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अमित भारद्वाज जी, उन्होंने जानना चाहा है कि सर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होगी? ऐसा संदेह बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का है। हम लोग भी बात करते हैं, वो जानते हैं सर कब शुरू करेंगे, कैसे होगा, तो आप इसको भी आप बताएंगे। देखिए, अभी मैंने कहा कि ये पॉलिसी हमारे सामने, इस पॉलिसी की अब ये पॉलिसी बिल में कन्वर्ट होगी। बिल के कन्वर्ट होने के लिए डेफिनेटली एक पूरी टीम बनेगी नेशनल लेवल के ऊपर, जो मैंने उसको बिल में कन्वर्ट करेगी और जो पार्लियामेंट के सामने जाएगा, पार्लियामेंट से पास होकर के उसमें ज़्यादा डिटेल्स होंगी। जो भी बिल बनेगा उसके अंदर वो पूरा कॉम्प्रहेंसिव होगा और उसमें ज़्यादा डिटेल्स होंगी, और उसके बाद ये पॉलिसी हम लोगों के सामने आ रही है। मुझे लगता है कि टीम बनना, बिल बनना, वो शायद अब नेक्स्ट सेशन पार्लियामेंट का होने जा रहा है, उससे जो नेक्स्ट सेशन होगा, फ्रॉम दिस सेशन टू नेक्स्ट, ये जो 15 सितंबर से सेशन है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ पार्लियामेंट के सामने जाना चाहिए। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ थिंग्स। एक सवाल और आप लेंगे, मेरा ऐसा निवेदन आपसे है, आपका समय बहुत कीमती है। एक हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पूछना चाहते हैं कि सर यूजी कॉलेज में अब रिसर्च सुपरविजन के लिए क्या होगा? वहाँ के टीचर्स क्या रिसर्च सुपरविजन कर सकते हैं, पीएचडी गाइड बन सकते हैं या नहीं?
और साथ साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है सर, जहाँ यूजी और पीजी टीचर्स की भर्ती एक ही माध्यम से होती है, तो क्या उसमें भी कुछ बदलाव होगा? जैसे आपने पहले ही बताया कि कुछ इंस्टीट्यूशन रिसर्च होंगे, इंटेंसिव होंगे, कुछ टीचिंग होंगे, तो ऐसी शंका भी लोगों के मन में है, इसको भी आप शांत करें। नहीं, देखिए, संस्थाओं के यहाँ दो क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ। एक तो ये कि भाई हमें क्या करना है, और दूसरा इशू ये है कि संस्थाओं के स्तर पर क्या हो रहा होगा या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। सीधी सीधी बात है कि जहाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ फैकल्टी के अपॉइंटमेंट में ऑफ कोर्स स्टेट लेवल पर क्या डिटेल होती हैं, उनके 1 या 2 बोर्ड बनते हैं। मुझे नहीं लगता 2 बोर्ड बनेंगे, वो एक ही बोर्ड रहेगा लार्जली। लेकिन जो बोर्ड के सदस्य होंगे उनको ये क्लियर होगा कि चूंकि अंडर ग्रेजुएशन के लिए जहाँ हमें करना है, वहाँ टीचिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, और वो ग्रेजुअली फिर रिसर्च की तरफ बढ़ें, वो उनकी अपनी चॉइस है। दूसरी बात, जो रिसर्च इंटेंसिवनेस है या टीचिंग एंड रिसर्च इंटेंसिवनेस है या खाली टीचिंग इंटेंसिवनेस है, ये इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल ऑप्शंस हैं। ये सरकार की तरफ से निर्धारित करने का इसमें कोई इशू नहीं है। आप आज टीचिंग में एंटर करते हैं, कल अच्छा रिसर्च करते हैं और किसी अच्छे रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में आप स्विच ओवर कर सकते हैं, ये तो आपका चॉइस है। तो इसमें किसी इंडिविजुअल को कहीं घबराहट की जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली सरकार की इच्छा ये है कि जैसे जैसे एजुकेशन में हम आगे बढ़ें, पीजी में बढ़ें या उससे आगे जाएं, तो फिर रिसर्च इंटेंसिटी जो है वो बढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबकी जिज्ञासा को शांत किया। कुछ एक क्वेश्चंस और भी हैं। अब मैं उन सवालों को लेने के लिए मैडम डॉक्टर पंकज मित्तल जी से निवेदन करूंगा। 2 क्वेश्चन हमारे श्रोताओं के वो टेक ओवर करेंगी, ऐसा मेरा निवेदन है। डॉक्टर मिस्टर पंकज मित्तल जी, अगर आप मुझे मैडम सुन पा रहे हैं तो एक सवाल आप जी मैडम, एक सवाल आपके लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स का है। वो जानना चाहते हैं कि जैसे आपने अपने वक्तव्य में भी बताया कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले सकते हैं, अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कई जगह कई यूनिवर्सिटीज में आप कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्लेस की बात आपने अपने उद्बोधन में कही। उसी से संबंधित एक श्रोता पूछना चाहते हैं, सरस्वती कॉलेज से हैं, कि ये कैसे संभव होगा कि हम मल्टीपल यूनिवर्सिटी से कोई प्रोग्राम कर पाए। मैडम प्लीज। 2 तरीके से संभव होगा। एक तो जो ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का जो प्रोविजन है, इसमें अगर आपने 1 साल में पढ़ाई करके छोड़ दिया और आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो ऑब्वियसली आपको सेकंड ईयर में किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी यहाँ भी होगी, और फिर आपको डिग्री मिलेगी सेकंड यूनिवर्सिटी से। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी के क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे सेकंड यूनिवर्सिटी में। दूसरा, जब हम ये एबीसी की बात करते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका पर्पस ही ये है कि आदमी अपनी फ्री विल पे पढ़ाई कर सके। तो उसको कोई कोर्स, अगर उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर कोर्स मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी में है, तो वहां से उस कोर्स में एडमिशन लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जो यूनिवर्सिटीज एबीसी की मेंबर बनेंगी, उनको प्रोग्राम में तो एडमिशन मिलता ही मिलता है हर जगह, पर उनको इंडिविजुअल कोर्स में भी एडमिशन की परमिशन देनी पड़ेगी, जिससे कि वो, जैसे कोर्स का मेरा मतलब है पेपर को कोर्स बोला गया है एबीसी में, कि जो कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी में है, तो आप वहां पे उस कोर्स में एडमिशन लेंगे, तीसरी यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स में एडमिशन लेंगे, और उन सबके क्रेडिट्स जो है एबीसी में जमा होते रहेंगे, और जो लास्ट में जब आपके पास उतने क्रेडिट जमा हो जाएंगे जितने आपको चाहिए, फिर आपको जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है वहां से डिग्री मिल जाएगी। तो ये एबीसी की पूरी रेगुलेशन बनेगी। अभी प्रोफेसर मल्होत्रा जी ने बोला कि रेगुलेशंस बनेगी, इसका मतलब पॉलिसी एज इट इज उसका बिल नहीं बनेगा, पर हाँ पॉलिसी में जो अलग अलग प्रोविजंस है, जैसे मान लो हैकी बनाना है तो हैकी का एक अलग से बिल बनेगा, एबीसी बनाना है तो एबीसी का एक अलग से रेगुलेशंस बनेगा। तो इस तरह से जो पॉलिसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनका कुछ हिस्सा पार्लियामेंट में जाएगा, कुछ रेगुलेशंस बनेंगी, डिपेंडिंग अपॉन दिस कि किसका क्या लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो बनते हुए मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेने का प्रावधान रहेगा।
धन्यवाद मैडम। एक 2-3 सवाल और आपको ही लेने होंगे ऐसा मुझे लगता है। एक श्रोता हमारे पूछते हैं कि जो ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, आने वाले टाइम में उनका सर्वाइवल किस तरह होगा नहीं होगा, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनना होगा, क्या होगा, आप इसको भी एड्रेस करेंगे, ऐसा आपसे अनुरोध है। देखिए, पॉलिसी में ये कहा गया है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। अब आप ये देखते हैं कि भारत में जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस है ना, उसमें साइज का वेरिएशन बहुत है। 100 या 50 बच्चों के कॉलेजेस भी हैं। कई बीएड कॉलेजेस में सिर्फ 100 बच्चे ही हैं। तो पॉलिसी में ये कहा गया है कि वो उतना सॉर्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी वो रखिए इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन मिले। जब भी आप छोटे छोटे कॉलेज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक सिंगल फैकल्टी कर पाते हैं, उतने टीचर्स नहीं रह पाते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको अपनी कॉस्ट भी निकालनी होती है कॉलेज की। तो अगर ये कॉलेजेस मिल के कह दें कि क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस इकट्ठे काम कर लें, या कोशिश ये रहेगी कि सारे इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े रहें और सारे डिग्री अवॉर्डिंग रहें और एफिलिएटेड कॉलेजेस का स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, तो सारी यूनिवर्सिटीज को या सारे कॉलेजेस को यह अधिकार रहेगा कि वो अपनी डिग्री खुद दे पाए और मल्टी डिसिप्लिनरी और बड़े इंस्टीट्यूशन बने। रादर पॉलिसी में ये कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन 3000 से कम बच्चों का नहीं होना चाहिए। तो 3000 की एक तरह से लिमिट सेट की गई है कि आपको 3000 बच्चे जरूर रखने चाहिए। धन्यवाद मैडम। बस 2 छोटे छोटे सवाल बहुत जल्दी मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनकी जिज्ञासाएं जितनी भी आप शांत कर पाएंगे अच्छा रहेगा। ऐसा ही एक सवाल है हमारे श्रोता का, वो पूछते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी कि क्या ऑनलाइन पीजी कोर्सेज वो जॉब के साथ कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन पीजी कोर्सेज जॉब के साथ कर सकते हैं। और यूजीसी ने अभी थोड़े दिन पहले ये भी सर्कुलर निकाला है कि आप एक समय में पैरेलली 2 डिग्रीज भी कर सकते हैं, पर उसमें से जो फेस टू फेस है वो एक ही हो सकती है मैक्सिमम, दूसरी डिग्री ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह ऑनलाइन डिग्री जो है आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप जॉब के साथ भी कर पाएंगे। मैडम अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा अपने श्रोता के बिहाफ पे। वो जानना चाहते हैं कि राकेश जी हैं कि उनको यूजी में अगर उनके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो क्या पीजी में वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ के पीजी केमिस्ट्री से कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा उनकी शंका है। देखिए, इतनी फाइनल डिटेल्स तो अभी नहीं आई हैं, पर जिस तरह की लिबर्टी पॉलिसी में दी गई है, हो सकता है कि उसका कोई एक एंट्री क्वालिफिकेशन प्री रिक्विजिट जैसा हो कि हाँ, जितनी केमिस्ट्री की नॉलेज मास्टर्स पढ़ने के लिए जरूरत है उतनी आपके पास है कि नहीं, तो वो चेक करना जरूरी होगा। इसलिए ये कोशिश की जाएगी कि अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा तो आपका कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके आपको ये चेक कर लिया जाए कि आपको उतना मिनिमम लेवल है कि नहीं, और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाए। और अभी इसकी फाइनल डिटेल्स आनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्वेश्चंस कुछ और भी हैं, बट वो मिलते जुलते हैं तो उन सबको ले पाना संभव नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत सारे ऑडियंस ने, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारे दोनों ही वक्ताओं की बहुत तारीफ की है, बहुत इंफॉर्मेटिव माने स्पीच को, भाषण को बताया है। बहुत अच्छा हम लोग को लगा आपने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए हरे कृष्णा जी बाद में आपका देंगे, बट मैं सेशन को हैंडल कर रहा था, इसलिए मैं भी आपका 2 शब्दों में धन्यवाद कहता हूं। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी हैं। अब मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दें और हम सबको अपना उद्बोधन दें। प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी। थैंक यू Professor Veerpal ji. At the very outset, I extend a very warm welcome and convey my deep sense of gratefulness to our guest speaker, Dr. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian Universities, who is an academician as well as an administrator of very high caliber. After her having taken over as Secretary General of AIU, she has
definitely inculcated a new culture of coming up to the mark among all the universities of this country. And she has definitely deliberated upon all the relevant aspects of new education policy of this country. The second speaker, whom I am not terming as guest speaker because he is no doubt enjoying a very high position of importance at the national level in social science research system of this country, but he is very much a colleague of ours, and he has also dealt at length the various implications of this policy. As for myself, I would be very brief because of two reasons. One, almost all the relevant aspects have been not only touched upon, but elaborated upon by the two very distinguished speakers. Secondly, I have the habit of being brief and comprehending too quickly. To my mind, the most important aspect of this policy is that it is asking us means the teaching community as such, to take a big leap, to unleash the potential of student community in this country while creating an environment of world-class teaching learning in the country itself. और बड़ी छलांग लगाना वास्तव में असंभव तो नहीं है, परंतु कठिन जरूर है। मेरी दृष्टि से जितनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के शिक्षकों ने आज इस वेबिनार में प्रतिभाग किया है, इससे मैं कम से कम संतुष्ट हूँ, कन्विंस्ड हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इंटेंट है उसके अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए काफी हद तक तैयार कर रही है। सबसे बड़ा काम है टीचर्स को इस बात के लिए तैयार होना कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं या शोध के माध्यम से कर रहे हैं, वो अब बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दूसरों के द्वारा, पीयर्स के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि रुपया वही काम मेरठ में करेगा जो काम वो चेन्नई में करेगा, लेकिन रुपए की इंट्रिंसिक वर्थ बराबर है पूरे देश में। इसीलिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस मान्यता पर आधारित है कि इंटर यूनिवर्सिटी वेरिएशंस इन स्टैंडर्ड्स, इंटर यूनिवर्सिटी वेरिएशंस इन setting of question papers, as well as delivery of course content and also in evaluation will be minimized. वास्तव में जो डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है या जो ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ कोर्स कंटेंट है, उसका आधार ही ये है कि हर एक को इतना मिनिमम तो करना पड़ेगा। There will be variations in research output, variations in quality of research output, but even that quality of research with all these variations will have to scale
ए मिनिमम लेवल ऑफ एक्सीलेंस। और ये इस पॉलिसी की बहुत बड़ी विशेषता है। अब तक हम लोग, प्रोफेसर मल्होत्रा ने टर्म यूज की थी साइलॉस, मैं तो साइलॉस नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि अब तक हम लोग जिस आइवरी टावर में बैठे हैं, वो आइवरी टावर में बैठ करके अपना काम करना अब आगे संभव नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स इसके लिए तत्पर हैं। वो अपने आप को सबमिट कर रहे हैं, not only to scrutiny by peers at the national level, but also to the extent that their work, their degrees, their credits may be reviewed by the best universities in the world. ये सिस्टम न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब मैंने इसको पढ़ा तो इसके दूसरे ही पेज पर जो इसकी समरी है, जहां हायर एजुकेशन शुरू हो रहा है, सबसे पहले उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली और ब्रिलियंटली एनालाइज किया है कि हमारे सिस्टम की कमियां क्या हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करना और उसके पश्चात उन कमियों को दूर करने और आगे की यात्रा के लिए रोड मैप तैयार करना, ये इस पॉलिसी ने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग, यानी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि जब बोर्ड ऑफ स्टडीज इकोनॉमिक्स की होगी तो उसमें मैथमेटिक्स के भी लोग होने चाहिए और उसमें साइकोलॉजी के भी लोग होने चाहिए, इंजीनियरिंग के भी लोग होने चाहिए। उसी प्रकार से रिजिड स्पेसिफिकेशंस इन डिसिप्लिन्स अब नहीं होगा, परंतु स्पेसिफाइड डिसिप्लिन्स तो होंगे ही, अर्थात बीए, बीएससी, ये डिग्रीज के नाम रहेंगे। पर है क्या कि जो बीए कर रहा है वो मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है और फिजिक्स भी पढ़ सकता है, और एक सब्जेक्ट जो इस समय की अर्स्टवाइल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है वो भी ले सकता है। यानी इस तरह के स्टूडेंट को वाइडर चॉइस देना। और वर्ल्ड ओवर ये प्रूव भी हुआ है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन देयर लाइव्स आर no doubt those who have a very sound grounding in science, technology, engineering, and mathematics, no doubt. But with the knowledge of science, technology, engineering, and mathematics, they are being well versed with such disciplines as economics, psychology, sociology, and law will place them in an advantageous position in the job market. तो ऐसे स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसी बनी है। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग से एक्सपेक्ट करती है तो वो वर्ग है शिक्षक वर्ग और कुलपति वर्ग। सेंट्रल लीडरशिप ने अपना काम कर दिया है, हमें रास्ता दिखा दिया है, चलना हमें है। उस हमारे रास्ते के, हमारे मार्ग के सफर में कितनी डिफिकल्टीज होंगी उनको दूर हमें खुद करना है। स्टेट लीडरशिप ने भी अपना काम कर दिया, उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए टास्क फोर्स बना दी। बट द वर्क हैज टू टेक प्लेस एट द grassroots level, at university level. The deans of the faculties, the teachers who are heads of the departments, and ultimately every individual teacher is to be geared, is to be motivated to come up and renounce the path of rigidity, status quoism, or keeping on sticking to the same old course and same old sets of syllabi. This has become the thing of the past. Now there will be quite frequently or quite readily changing
new courses, new methods of pedagogy, new methods of delivering course content, which are comparable with the best in the country. वो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उसकी जो अवधारणा है वो तभी सफल हो पाएगी जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स में जो अंतर है वो बहुत कम रहे। क्या क्या इसमें आगे करना पड़ेगा, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत मिलकर बैठने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम सब इस बात के लिए तैयार हों कि हमें आगे अधिक परिश्रम के साथ, अधिक इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ना है, जिससे जैसे प्रोफेसर पंकज मित्तल जी ने कहा कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए यदि काम करना चाहते हैं, जो हमारी आज की यहाँ की उपस्थिति से स्पष्ट हो रहा है, हमारा इंटेंट, हमारा जो इरादा है वो स्पष्ट है। इसलिए हमें आगे आकर के बहुत कड़ी मेहनत के साथ बढ़ना है। मैं समझता हूँ कि हम आगे इस पर और विस्तृत विचार करते हुए एक अच्छी रूपरेखा बनाने में सफल होंगे, जिससे इस पॉलिसी के लिए हम अपने आप को आगे 5-6 महीने में तैयार कर लें और 2021 के एकेडमिक सेशन से हम ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्रीज हैं, इनके लिए तैयार हो पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thanks for your motivation and presidential address for this important webinar. सर, निश्चित ही हम सभी आपके निर्देशन में काम करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा हम सब लोगों का मानना है और हम ऐसा कर पाएंगे, ऐसा हम सब लोगों का विश्वास है। Now, at the end of this program, I invite Professor Hare Krishna, who is really the main person of this webinar and convener of this webinar, for proposing vote of thanks. Professor Hare Krishna ji. Thank you, Professor Veerpal ji. Good afternoon, all. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. सुन पा रहे हैं, ठीक सुन पा रहे हैं जी, please. Honorable Vice Chancellor, sir, respected Pro Vice Chancellor, Madam, esteemed chief guest of the event, the eminent key speakers, colleagues, participants, friends, dear students, ladies and gentlemen. It is indeed my duty, pleasure, and privilege to propose a vote of thanks on this gracious occasion. On behalf of the organizing committee of the webinar National Education Policy 2020, Implementation in Higher Education, I offer a very hearty vote of thanks to one and all. We are fortunate to have the head of the university as our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Taneja, who always encourages academic activities in the university. From the depth of our heart, we profoundly thank him for all the inspiration, motivation, and encouragement that he has so generously rendered to us. The Pro Vice Chancellor, of Professor Y. Vimala, has always been a guiding source for all of us. We express our gratitude to her for her always eager to help attitude towards everyone. An ignited mind is the most powerful weapon on the earth, above the earth, and under the earth. And this is got through education. Education is the most profitable investment for all the future of humankind. It is after 34 years, we in India are witnessing a mega change in terms of National Education Policy 2020, a noble mission of our visionary Prime Minister. We are also proud of our state government to have initiated the implementation of this policy before any other state in the country. A steering committee has also been formed at state level to develop a mechanism
for its implementation. The chief guest of today's webinar, Mrs. Monica S. Garg, the Additional Chief Secretary Higher Education, is the chairperson of this committee. The idea of such webinars was floated by her about 10 days back. She asked all the universities of the state to organize such thought-provoking webinars on this vibrant topic of national education policy. I'm thankful to Professor Birpal Singh to have picked up this challenge for our university. He initiated the organization of the webinar and was very well appreciated and supported by the Honorable Vice Chancellor, Sir, and Pro Vice Chancellor, Madam. We thank Mrs. Monica S. Garg in absentia for accepting to be the chief guest of this webinar. We are overwhelmed with the presence and a vibrant speech of Professor V.K. Malhotra, our keynote speaker. Your contents today, sir, will be echoed in our minds for a long time to come. I hope each one of us will return home with a lot of treasure of wisdom about education in India. We would like to express our sincere gratitude to the keynote speaker, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, for an interesting and inspiring address. Her views threw light upon various aspects of today's topic. Being associated with the university system for 3 decades, she could clarify many intricacies of the 66-page document. Most of the credit of an event goes to the convener, while many others work. In this case, I would like to place on record the wonderful efforts of the organizing secretary of the webinar, Professor Birpal Singh, Department of Physics, for his tremendous efforts to make this webinar a successful event. We thankfully acknowledge the help of our registrar, Shri Dhirendra Kumar, controller of exams, Professor Roop Narayan, and the finance officer, Shri Sushil Kumar Gupta, for their moral support and official arrangements. We would like to express our sincere thanks to Shri Sandeep Agarwal and Shri Nitin Sharma for making the smooth technical arrangements for the virtual online webinar. We are also grateful to the print and electronic media for their presence and excellent coverage of this event. Here, I would also like to thank the faculty members. I can see many of them here, and the non-teaching staff of the university, including SCRIET, for joining us here today. It is my utmost duty to thank the principals and the faculty members of the affiliated colleges who have joined this meet on a very short notice. I can see that there are participants from far off places like Kashmir. I can see many professors from Delhi and many students and alumni as well of the university. And therefore, last and the most important, I thank and bless our students and alumni who have so enthusiastically and patiently attended the webinar. It is for your bright future, dear students, that we are all working for. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for proposing vote of thanks. अब हम सभी लोग राष्ट्रगान के लिए राष्ट्रगान यहाँ पे हम लोग वर्चुअली प्ले करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करने की परमिशन माननीय कुलपति महोदय से लेंगे।
अब मैं माननीय कुलपति जी से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। मैं माननीय कुलपति जी से कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति लग रहा है सर। ठीक है, सर की अनुमति हम लोग मान लेते हैं और सर की अनुमति मानते हुए ही आप सभी आए। आप सभी का धन्यवाद और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।